वेलकम टू सुन्ना इनसाइट। यहाँ हम लोग कुरान के बारे और सुन्ना के बारे धीरे धीरे जिस कुरान के एक एक करके वर्ष से सारे जितने भी होंगे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद सुन्ना से रिलेटेड सारे चीज़ों के बारे जानकारी लेंगे एंड देन ये कंटिन्यूसली चलते रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं। ये इंग्लिश में होने वाला है। सूरतुल फातिहा, ये सबसे पहला चैप्टर है। अल फातिहा मीनिंग ओपनिंग चैप्टर। इसमें 7 वर्सेस हैं, जैसा कि एक एक करके देखेंगे और समझेंगे। अल फातिहा opening chapter, that is beginning of the Quran. In the name of Allah, most gracious, most merciful. यहाँ एक है इसका मीनिंग, उसको भी देखते हुए चलेंगे। most merciful, the word Rahman and Rahim translated to most gracious. अच्छा, most gracious guy and most merciful are both intensive use referring to different aspects of Allah's attribute of mercy. Allah's attribute, then the superlative degree in English. Praise be to Allah, the cherisher and sustainer of the worlds. World का sustainer. The Arabic word Rabb used to describe Lord has also meaning of cherishing, sustaining, bringing to maturity. Allah cares for all the worlds He created. Most gracious, most merciful. Again वही आ गया. Most gracious, most merciful. Master of the day of the judgment. Then they do we worship, and thine aid we seek. यहाँ वर्शिप का बाद on realizing our souls, Allah's love and care, His grace and mercy and His power and justice. The immediate result is that we bend to the act of worship and see both our shortcoming and His all-efficient power, and then shows us the straight way. And again यहाँ, if we translate the English word guide, we shall have to say guide us in the straight way. आगे बढ़ते हैं. The way of those whom Thou hast bestowed Thy grace, those whose portion is not wrath, and we go not astray. यहाँ पर भी तो हो गया 23, 24. इसका मीनिंग देखते हैं. Note that the words relating to grace are connected actively with Allah. Those relating to wrath and impersonal. In a one's cause, Allah's mercies compasses us beyond our desert. Are there two categories? Those who are in darkness and wrath, and those who stray. The first are those who deliberately breaks Allah's law. The second who strays out of carelessness or negligence. Both are responsible for their own acts and or omission. In opposition, both of the people who are in the light of Allah's grace. So यहाँ तक हो गया सूरह अल-फातिहा, that is chapter 1, verse number 1 to 7. आगे चल कर के धीरे धीरे खुद भी सीखना है, दूसरों को भी सिखाना है। अभी ये स्टार्ट हुआ है ये जर्नी, धीरे धीरे आगे इम्प्रूव करते जाएंगे और कंप्लीट करते जाएंगे।